So, if I can quickly start off with Yeah. specific information that I think we should definitely not miss, and no one knows better than us. So, just to remind our listeners, especially those who are new and may not know, Mayur, I'd like to start with you. Mhm. The stars that you have really enjoyed dubbing for, and the films that you have done over the span of your career. How many years has it been? Entire career, if I say, it's almost like 21 years now. And when did 2001. you, which part of your career did you really start dubbing for the stars? Right from the Yeah. beginning? So I remember very, very precisely, it was 2007, the year in which Rajni sir's Shivaji the Boss got released. Right. That was the first chance, and the directors, they somehow found me, and this miracle happened in my life. Somehow found you, Yani, through a process of voice auditions? Yeah, but it's a very interesting. There is an interesting incidence to this. Acha. Uh, they actually finished dubbing the whole movie except Rajni sir's part, and they were Acha. looking for a suitable voice. Acha. Swanam Kirkire was the writer. Mm-hmm. Jitendra Kirkire, or we call him Dabu Kaka into the industry, everybody knows him. So he was also into the direction process, part of the direction team, and they were looking for some suitable voice because Mr. Anil Kapoor did Nayak with Shankar sir, the Shankar movie. So originally it was decided that he would be voicing for Rajni sir. Hmm. In fact, he Hmm. started with the process also, but then they were not finding the voice, on the body. So then they decided to discontinue with that idea, and they were looking for a suitable voice. And during the same time, I think for Star Gold, there was this Hollywood movie in which Rajni sir has done a cameo. It's just a one scene role and few lines here and there. And I was in some small studio in Andheri for recording something else. And Dabu Kaka was doing this movie for Star Gold, and he said, "अरे ये एक सीन है जरा ट्राई करना देखते हैं अगर वॉइस जाता है तो." And I had no clue he was simultaneously doing Shivaji the Boss, and I just tried, and he said कि वॉइस तो जेल होता है अच्छा, तू कल एक काम कर ऑडिशन के लिए आ जा. So I went to Sri Lakshmi studio the next day, Hmm. and then we did one scene. And then because they were having a tight deadline, they had to deliver the movie also. They said, "We are sending the scene, but we are going ahead with the dub because the voice is matching nicely. And only thing that you have to work upon is the performance and all." And the same feedback we got within 2 days from the production team also from Chennai, that maybe in terms of attitude and energy it can be enhanced, but the voice is suitable, and that's Wow. how the long journey started. How nice. And then how many films have you dubbed for him since then? I will be dubbing, I think next week I will be dubbing my 10th movie for Rajni sir. Wow. Nine Wow. movies already done. That's quite a Lovely. run, huh? And Yeah. have you had any interaction with him that about your voice for No, him? and this is the most asked question that I have ever got. But there were one or two, chances that I missed, maybe because, he was not in the town. In fact, he had to make, an 11th hour trip to US for some health reason. And I was already in the town while I was dubbing Kala. And I was there in Chennai for 3 days, and everything was set. Like he was visiting studio also during those days. And then I could meet, in fact, Dhanush during that recording for almost 3 days. All 3 days we had either the lunch or the dinner together, and he was saying that Appa will come and we will have a meeting, or we will have a sort of get together. But then he had to rush to US, Mm. so I missed that chance. For Lal Salam, I think in Mumbai he was there for some shooting also. But then I had to travel out of town for some show that I had a commitment. So it has And not are there taken any place. other actors you've been dubbing for? Other actors, Other stars like this? I think I've done Anil Kapoor in English for AK versus AK, Right. and
not a leading man, but yes, there are some leading villain characters or leading character roles for which I have dubbed. Okay, I'm going to come back to you. Yeah. Uh, Viraj, tell us about your journey. My journey, well, I started 28 years ago. It's been 28 Wow. years now. Hmm. And, I had mentioned this earlier also. I started with all small, small characters, and it was not immediate. It wasn't an immediate thing कि मुझे कोई लीड करने का मौका मिला है या कुछ ऐसा हुआ था. बहुत और हम ये लोग जानना क्राउड. बहुत जरूरी है, सबके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ऐसा नहीं कि हम आए और हाँ, सीधे स्टार्स की डबिंग हमने शुरू कर दी। इसमें हाँ, और सालों ये लग जाते हैं। बहुत बहुत वक्त लगा. और ये भी था कि जिन लोगों के लिए डब किया उस वक्त वो स्टार्स वो उस वक्त नहीं थे. वो हम्म। इन द प्रोसेस बने. लेकिन मेरी जर्नी ऐसी थी कि मैंने क्राउड डबिंग से शुरुआत की. हम्म। लिटरली एक एक वर्ड वाला सीन होता था, या एक लाइन वाली कोई एक लाइन होती थी, और फिर वो बोल दो, और फिर आप दिन भर बैठे हुए हो उसके लिए. सो एक प्रोसेस. और बैक देन इट वाज नॉट जैसे आज डबिंग होती है. नेटफ्लिक्स है, अमेजोन है, ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स आर देयर. वो प्लेटफॉर्म्स तो थे नहीं. हाँ। देयर वाज हिंदी सिनेमा, देयर वाज रेडियो प्ले, एंड And there's English cinema which was being dubbed into Hindi yes, also. and it was those were Later. not as it was a little later. और उसकी क्वांटिटी हाँ, बहुत ज्यादा नहीं थी. वो बहुत हाँ, कम फिल्म्स धीरे-धीरे आ रहे थे, वो धीरे-धीरे आ रहे थे, धीरे एक-एक धीरे करके, धीरे धीरे ऐसा हो रहा था. एक-एक करके, लेकिन हाँ। जो एक नेट प्रैक्टिस जो जिसे कहते हैं ना, वो मेरी हिंदी फिल्म्स की वजह से, जो क्राउड डबिंग्स होते थे उसमें. हुँ, एंड देन ग्रेजुअली इवन इन द इंग्लिश फिल्म्स, इंग्लिश टू हिंदी जो होते थे साउंड डिवीजन में मेनली, तो वहाँ जब मैं करता था तो वहाँ भी स्मॉल स्मॉल कैरेक्टर्स होते थे. उसके हुँ, बाद धीरे-धीरे फिर एज़ यू काइंड ऑफ टेक वन स्टेप एट अ टाइम, उसके बाद पता चला कि ओके, ये वॉइस ऐसी इसके लिए, इस कैरेक्टर के लिए भी ट्राई करो, उस कैरेक्टर के लिए भी ट्राई करो. और फिर उसके बाद बहुत वक़्त के बाद हीरोज़ की डबिंग हुई. तो तो ये बताओ बिल्कुल कौन नहीं से थी कि हीरोज़? अ अ, वैसे तो यू मीन हिंदी या कुछ John इंग्लिश? Ramcharan, दोनों, दोनों। नो, रामचरण आई डब्ड फॉर हिज फर्स्ट हिंदी मूवी. ज़ंजीर। ज़ंजीर के लिए मैंने, पर वो Upen रिलीज़ Patel, होने John में आज से 10 Abraham. साल पहले था. वो 10 साल पहले था. पर वो पहले जो थे, वो मुझे याद नहीं. पहला वन ऑफ द डीनो मोरिया वाज़ वन ऑफ द फर्स्ट यस, डब्स यस, दैट आई हैड डन. यस, और देन जॉन जॉन अब्राहम वाज़ देयर. यस। और उसके बाद जो हुआ था कि वो बिकॉज़ जॉन बिकेम वेरी पॉपुलर, हुँ। हर एक बंदा जो फ़ोन करता था, वो कहता था हमें एक फ़िल्म डब करवानी है आप ही से, और आप ही से करवानी है, इसको जॉन बनाना है. ओह! मतलब तो हर बड़ा एक्टर को जॉन बनाना है। हर एक्टर को जॉन बनाना है, तो बड़ा अजीब हो गया था वो. बहुत ही अजीब-सी हो गया था. तुम जॉन या से बट मिले भी थे ना? हाँ, जॉन से मिला था. जॉन वाज़ वेरी ग्रेशियस. दिस हुँ, इज़ वन ऑफ दोज़ थिंग्स वेयर जॉन वाज़ वन ऑफ दोज़ एक्टर्स. उससे पहले मैंने जो डब्स किए थे दूसरे एक्टर्स के लिए, कभी-कभी ऐसा होता था, आपको प्रोडक्शन से कहा जाता था, और ये मेनली हिंदी सिनेमा में होता था. जब हिंदी सिनेमा बहुत ज़्यादा डब होते थे, तब कहते थे कि आप बताइए मत किसी को कि आपने डब किया है. अगर प्रेस आपको फ़ोन करेंगे तो आप हुँ, बताइए मत. अ, या तो डायरेक्टर्स या मेनली प्रोडक्शन से ऐसा होता था. और जो एक्टर्स जिनके लिए आप डब करते हैं, वो कभी-कभी धीरे-धीरे हाय आई एम सो एंड सो, गुड डब, अ डोंट टेल एनीबॉडी दैट यू डब फॉर. तो ये होता था. तो हुँ। ये बहुत ज़्यादा होता था. Yeah, yeah. अ, And इट वाज़ in अ ग्रेजुअल प्रोसेस. yeah, among Hollywood actors, you're also the voice of Tom Cruise. टॉम क्रूज़, यस. और कौन? बताओ, बताओ, इतना धीरे-धीरे टॉम क्रूज़ क्या? उस वक़्त तो मैं समझ नहीं पा रहा था करूँ क्या? मैंने तो आई रिमेंबर व्हेन आई वाज़ रिकॉर्डिंग फॉर मिशन इम्पॉसिबल, मैंने लीला जी से कह दिया था प्लीज़ आप मुझे रिप्लेस कर दीजिए, मुझसे नहीं हो रहा है कुछ. आई कांट आई कांट डू दिस, आई कांट डब वो क्यों? हीरोइज़्म. क्योंकि ये आराधना में हम लोग डब करते थे. हुँ, और हमारे सबके चहीते हैं कर्नल साहब, लेकिन हुँ। सबको उनसे डर भी लगता था बहुत ज़्यादा. या बहुत ज़्यादा. वी ऑल लव बहुत हिम. ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो बहुत डाँट पड़ती थी।
बहुत डांट पड़ती है, और साइलेंटली डांट पड़ती थी, ऐसी डांट नहीं पड़ती थी ये क्या कर रहा है, ये ऐसी वाली डांट नहीं होती थी। वो सिर्फ टॉक बैक ऑन करके बोलते थे, एक और। क्यों? अगर आपकी हिम्मत अगर होती थी उनको पूछने की क्यों, तो वो कहते थे बस एक और। तो आप समझ जाओ कुछ तो गड़बड़ आपने कर ली है। तो आई वाज ऑलवेज ऑलमोस्ट क्विटिंग द फिल्म एंड द फील्ड, बहुत। एक और करते करते। एक और करते, मुझसे नहीं होगा ये। हाँ Yeah, but yeah, other than that, there were many actors. Spider-Man series was one of those, very popular ones amongst the English. yeah. I think Avatar and Matrix were also something that Avatar, Fire. Matrix. Thanks, Sanket, यार तूने मतलब मैं कौन भूल कौन गया था. क्या? Avatar, which I think Mona is also a part of. Correct. of course. Sam Worthington. Wherever Sam Mona was there, I was there. हाँ, हम एक दूसरे के पीछे पीछे घूमते थे आगे पीछे। In fact, राइट। लीडिंग मैन एंड लीडिंग वुमन भी साथ में काफी किया है आप दोनों ने। आप हाँ बहुत बहुत क्या है। अब तक हो रहा Yeah, है, so that's what it's still happening. We still did a couple of projects last month. हमने Wow. बहुत Yeah. सारा रियाज शुरू में आप लोगों को देख के ही किया है, आपके काम को देख के। अरे सो विराज की डबिंग हो गई है और हम क्राउड कर रहे हैं, तो वो सीन बज रहा है। अब अपनी डिमांड पे तो बजता नहीं है, पर हम क्राउड करते करते देखते थे, अरे ये वेरिएशन, और मयूर, ये this is what डिलीवरी। I'm saying, this is what I'm saying, ये क्राउड करते करते जो हमने सीखा, वहां हम्म, बैठे बैठे जो सीखा, we true. had this liberty of not it only is while We had the dubbing, invaluable. right schooling, I would say, yeah. yeah, we had this, It's we all had invaluable. this liberty of sitting in the studio and hearing each other or listening, जो भी हो रहा है process एक होता है, Yeah. not just seniors, सिर्फ हमारे सीनियर्स थे उनकी बात नहीं थी, बट जैसे हम एक दूसरे के साथ भी जब बैठते थे, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव बात होती थी कि हम एक दूसरे के डब देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, जो Right. आज बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ रीजंस आज नहीं होता ये सब। Right. मैं वो थोड़ा And, प्रोफेसर भी हूं ना, तो टीचिंग वाली बात अगर करूँ ना, तो इसको One of the most डबिंग में friendly 100% पीयर टू पीयर लर्निंग है, टीचर टू स्टूडेंट लर्निंग नहीं है। इट्स 100% पीयर टू पीयर लर्निंग। Yeah. True. पीयर लर्निंग इज सो इम्पोर्टेंट when I इन started डबिंग। off, crowds were one of the most non-pressure friendly ways in which आप एक कमरे में थोड़े आपसे सीनियर लोग भी हैं, आप बाकियों की डायरेक्शन भी सुन रहे हो, आप देख रहे हो कि ये सीनियर्स जब ऐसा डायरेक्शन आता है तो क्या करते हैं अपनी लाइन के साथ, और फिर भी the environment is very chill because there's so many people, you're not as nervous as you would be कि जब आप अकेले होते तो जितना आपको डर लगता शायद उतना डर नहीं है। तो इट्स अ वेरी फ्रेंडली एनवायरनमेंट कि जहां आप बहुत सारे लेसन्स बहुत क्विकली सीख, एंड यू आर एक्सटेंसिवली देयर फॉर मे बी 6 to 8 hours, तो उतना स्टूडियो टाइम एक्सपोजर भी मिलना। सो आई थिंक क्राउड्स इज वन ऑफ द बेस्ट स्टेपिंग स्टोन्स टू गेट टू अ गुड प्लेस इन वॉइस। Absolutely. I think you get to be a fly on the wall and observe everything that's happening everything, around you, every everything, dynamic. You learn from every little word spoken in the room. yes. And Whether even it the is what direction, the whether it engineers is are, true, what the engineers are doing, what the directors are yeah. giving you as an input, what they have, everything. It was not just one, it was not only an artist who's going to inspire you with his or her performance, or what the way he or she is recording, but whatever the engineer, उन लोगों का क्या एक मेंटल स्पेस उनकी क्या है, जो डायरेक्टर है वो आपसे क्या बात कर रहे हैं, वो किस तरह से आपको बता रहे हैं कि क्या करना है, वो सब आप पीछे बैठकर सब कुछ देख पा रहे हैं। और ये सब लोग आजकल समझते नहीं है कि ये एक जरूरी प्रोसेस है। हम बिल्कुल, सब उसमें से गुजर चुके हैं। ये भी कोई बिलीव नहीं बिल्कुल, करता है जल्दी कि हम ये बिल्कुल, सब कर चुके हैं। रात रात बैठ के विराज हमने क्राउड डब किया है। हाँ बिल्कुल, मयूर, बिल्कुल, होल बिल्कुल, नाइट। आई रिमेम्बर entire आई यूज्ड night. टू डू होल नाइट एंड देन गो टू कॉलेज इन द मॉर्निंग एट 7 o'clock। या ऑफ कोर्स। क्योंकि वो बिल्कुल, अपना कामधेनु कॉम्प्लेक्स में दिन में वो रिनोवेशन वर्क चल रहा था, तो अंजू पिंकी ये लोग अपने कुछ प्रोजेक्ट कर रहे थे, एंड अंजू सेड वन फाइन डे आई रिसीव्ड व्हाट्सएप नहीं था शायद, एसएमएस मुझे मिला था कि कामधेनु में 2:30 एसएमएस था। टुमारो। हाँ, 2:30 टुमारो। आई सेड यस। देन शी कॉल्ड अप एंड सेड 2:30 AM, इट्स नॉट इन द आफ्टरनून, इन द नाइट यू हैव टू कम। और शायद गॉडफादर ये सब सीरीज चल रही थी उस जमाने में, तो उनमें कोई एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर था, और 2:30 टू आई थिंक 6:30 मैंने डब किया, 7:30 आई वेंट टू कॉलेज। वाओ तो वाओ।
Yeah. Wow. Yeah, no, I want to delve into many such little things that we have learned from. But before I do that, I want to just talk to Sanket about the highlights of his career and your journey. So I'm really happy that people like Mayur Viraj, you are here. क्योंकि आप सब you're like a bunch of people in the industry that when I start, so honestly speaking, there were only a few names that I knew of outside the voicing industry. Thankfully that is अब वो बदल रहा है वो दौर कि जहां आपको वॉइस आर्टिस्ट क्या होते हैं कौन होते हैं वो पता नहीं है. Thankfully that is changing now. बट जब मैंने शुरुआत की तब कुछ नाम बार बार डायरेक्टर्स के मुंह पे आते थे या कुछ आर्टिस्ट के बारे में वो बार बार कहते थे और कहते थे कि ये इनसे ये सीखो या इसको कभी देखो तुम डबिंग करते हुए या उसकी वो स्टाइल देखो तुम कैसे करती हैं या उनकी आवाज पता है तुम्हें किसने दी है या अमीषा पटेल पता है तुम्हें कौन पे आ रही है कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा. सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स ये सारी शुरुआत में बहुत सुनी हुई चीजें थी. And when I started paying close attention to what they were actually saying, and and I'm always this firm believer that हर वॉइस आर्टिस्ट एक सुपर हीरो है और हर एक के पास ना एक बहुत अजीब सी एक सुपर पावर है. फॉर सम पीपल आई गिव दिस एग्जांपल ऑफ शानूर समटाइम्स जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड इमोशन भी रहेगा ना, ही विल बी सिटिंग एज इफ देयर इज नथिंग हैपनिंग ऑन हिज फेस ऑन हिज बॉडी, बट ही विल डिलीवर दैट लाइन एंड यू हियर दैट लाइन बहुत कॉम्प्लिकेटेड बहुत एंग्री है या बहुत you कोई रो रहा है या whatever it is happening on his face, you will be like this guy is just chilling, कुछ नहीं कर रहा है. So every artist has this one unique trait that is very special to them, and the moment you start looking at all of them और वो एक एक पावर सबसे पिकअप करना शुरू करते हैं तो you understand how many tools you've already added to your kind of armory. And so thankfully I'm really grateful to Darpan to set this up that I'm able to मैं बैठ के I'm like a novice amongst all of you. मैं अभी कुछ पिछले 17-18 साल से कर रहा हूँ डबिंग एंड आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट बिग थिंग्स दैट हैपेंड वाज when Deadpool happened. I remember I was sitting right outside Mona Di के cabin के बाहर बैठा था and something had happened, kuch to report आई थी, some media interview had come, and I remember Mona Di just walked by and she's like, you better enjoy this, I'm telling you, you better enjoy this because this is as big as it gets. And I was so happy that it's happened in one of those studios which has taught me so much. And I've learned a lot from there, and I've done most of my big breaks out to Hindi films also from Sound and Vision. Which So are the heroes you're dubbing for, South heroes? Which so not? I've approximately dubbed for around 30 of them by now. Oh. Yeah, You've it's beaten us hilarious. all. Last It's, mein aake you've beaten us all. it's hilarious to when I look back and think about it, it's the funniest thing. But so there's like the right up there guys are there's Mr. Allu Arjun, Junior NTR, Mahesh Babu, Ram Charan Teja, Surya, Ram Pothineni quite recently, and and the list just goes on. And so the Do kind you of have a personal favorite? my personal favorite, I'm really partial to Surya, but Allu Arjun is Allu Arjun, and you cannot beat the style. So I mean, it's just a happy feeling at the end of the day when when people look at your work and they you're hey, Allu Arjun baat kar raha hai, aise sunai de raha hai, ye to. So when those kind of things happen, I know Viraj is going to talk about this because Viraj always he calls me whenever we speak on the phone. He's like, "Allu, kya kar raha hai?" So It's So like it's me really calling him Tommy. yeah. Oh, by the way, Mona. Oh, Tommy! So yes, I mean it's been phenomenal, and for I mean Deadpool happened after 10 years, and I think very recently we voiced Skanda at Sound and Vision, and I was able to sit across an actor that I had voiced for and speak with him, very candidly. और वो 17 साल के बाद हुआ है मेरे करियर How के. was that experience? What was his reaction to your dubbing? I mean, just like I mean, I think he's one of those I think stars that just like Viraj mentioned,
very gracious, very kind of him to invite me all the way to his house and sit down. And he's like, I've been wanting to do this for a while. मैं आपको बताना चाहता था कि आप लोग जो कर रहे हैं उसकी वजह से अब हर कोई हमें पहचानता है. I'm like, सर ये आप क्या कह रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं, आपका काम है. He's like, नहीं नहीं, वो तो एक चीज हो गई, बट मैं बोल नहीं पाता हूँ, बोल नहीं पा रहा हूँ आपसे हिंदी में, तो हिंदी में तो आप ही लोग बोल रहे हैं. And then I was able to ask him questions like, do you think कुछ चेंज करना चाहिए, कुछ बदलाव आना चाहिए, या मैं जो कर रहा हूँ वो तो नहीं, कोई फीडबैक नहीं है, आप लोग सब बहुत जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, यही प्लीज कंटिन्यू करो. And we were talking about how many films we've done, and I told him मैं कुछ 10 फिल्में की हैं आपकी. Like, मैंने तो 20 ही की हैं, तो मेरा आधा करियर तो तुमने बना दिया. So, I'm But like, I was that's really so happy sweet. that Not everybody is able to very embrace kind. that and talk about that so openly. And And so in that's fact, since the this point topic has when come you up, think about I think it. it's Yes. more mutual. Yeah, but I Because mean, I'm they add to our career as much as we try to add to the characters that they have portrayed on the correct. screen. But to come from an era where people are telling them not to reveal that they voiced for somebody like Monadi and Viraj, to come from an era where they've been explicitly told कि आप बताओ मत किसी को कि आपने हमारी voice की है, to come to a point where we are sitting across them, or companies like Warner Brothers and all are doing promotions and saying कि ये देखो हिंदी dub का एक video दिखाते हैं या backstage दिखाते हैं आपको. We've come a long way. I think we've come a really long. I'm glad that we've come in this direction. Yes, and it's taken us, I think, a good मैं तो कहूँगी एटलीस्ट मेरे करियर के तो 20-25-30 साल शायद लग गए क्रेडिट मिलने में, Right. Yeah, true. So that is a very big thing. I think that's a That big. brings us to an interesting question that I would like to take up. आपने मतलब list तो we know, but since how long you have been doing this, and I think since the beginning of your career, I think you have got the chance to do the biggies, the नहीं, ऐसा voice for नहीं the है. big names. Actually, my career has come in bits and pieces. I started voicing when I was a child. So I must have been 5 or 6 when I Oh, started. So I used to do a lot of radio spots and ad commercials in various languages: English, Hindi, Bangla, Odia. यही काम था ज़्यादातर. right, And right. then my parents moved to England, so we were away for a while. वहाँ पे भी, because my mother was a singer and she was very into cultural shows and things like that. So I was very actively involved always in everything, even though I was not working professionally. So I used to sing with her. I used to do recordings with her. Whatever she was doing, she would take me along, and that has been a huge learning experience for me. Learning everything on the job, as Sanket said, being a fly on the wall, watching everything that's happening. It teaches you everything so fast, and because you're not doing, you're only sitting and watching, you absorb like a sponge everything. True. So when we came back here, it was a struggle to get back into voicing, and we really could needed the funds at the time. So my mother was very keen that I try to meet as many people and get back and into voicing. So I did give it a good effort. लेकिन because we had just come back from London and I could not read any of the languages, तो वो थोड़ा सा मेरे लिए setback था. But all the language supervisors have been super helpful. They used to dictate to me. I used to write everything in English. Then, of course, धीरे धीरे I started learning to read Hindi and Bangla. उड़िया तक मैं पहुंची नहीं. But पहली again, हीरोइन कौन सी थी? The हाँ? first heroine that you dubbed for? इंद्रानी बैनर्जी. Oh, एक एक्ट्रेस थी. फिर उसके बाद आई डिड रानी मुखर्जी फॉर गुलाम, एंड देन Ghulam, आफ्टर okay. दैट उसके बाद से बेसिकली आई स्टार्टेड गेटिंग मोर कॉल्स फॉर एक्टिंग. और इस काम में आई थिंक विशेष फिल्म्स हैज बीन माय मुकेश जी हैज बीन माय strongest supporter, because he used to consider me his lucky mascot and invite me to dub for all his films, all his first time actors. And they never liked it because for them it's a very strange experience watching themselves on screen with a different voice. So True. it hurts them. It would hurt me probably if I were to watch myself on screen with a voice that does not belong to me. So you're taking away half my personality by putting somebody else's voice there. So have any of you faced this resistance or this kind of a backlash that, oh, I didn't like the voice that was used for me, or it was done against my will, or this should not have been done, or I didn't like it?
ऐसा कुछ आप लोगों ने कभी एक्सपीरियंस किया I है? think only you and Viraj will experience that because mainly we have dubbed for one language to another. It was हाँ not basically Hindi to Hindi. Because हाँ, when it happens in the मैंने primary यहाँ language, बहुत then फेस this किया है, conflict will हाँ take बिल्कुल, place. ये बहुत हुआ है। किया है। ये होता था, लाइक जैसे मैंने बिगिनिंग में बताया कि ये होते थे लोग ऐसे कहते थे कि आप मत बताइए, यू नो, आपको इस पार्टी में मत नहीं, आइए, मत आपको इनवाइट बताइए मिला तो है, या ऐसा था कि उन दिनों द होल थिंग यूज्ड टू बिकम अ स्कैंडल। वो एक हाँ सेंसेशनल बिल्कुल न्यूज़ बन जाता था कि अरे, बिल्कुल। एंड वो लिखते भी इस तरह अरे थे इसके कि डायलॉग कोई और बोलता है तो मतलब वो हाँ, एक कि बड़ी इनको न्यूज बन एक्टिंग जाएगी नहीं उसके आती ऊपर. या इनको हिंदी नहीं आती, Yeah, इसीलिए की डब आवाज हो रहा है। sort of a shortcoming for an actor. बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो वो इसलिए होता था। नहीं बट आई थॉट मयूर, बट ये भी होता था कि जो इंग्लिश बैक देन कुछ इंग्लिश फिल्में जो होती थी, Hmm. वो भी कुछ कुछ फिल्में जब डब उनको किया जाता था इंग्लिश में या यू नो Hmm. विच एवर लैंग्वेज, तो अगर वो प्रोमिनेंट एक्टर्स हैं उनमें, तो उन एक्टर्स को भी नहीं बुलाया जाता था। कुछ कुछ एक्टर्स होते थे जिनको बुलाया जाता था, जैसे Right. नसीर साहब अगर हैं उसमें, तो ही वुड Correct. डब हिज पार्ट। लेकिन दूसरे जो एक्टर्स होते थे उनको डब किया जाता था, लेकिन इवन दे वुड माइंड इट, उनको लगता था कि नहीं, मैंने क्यों नहीं किया ये। मैं मिल चुका हूँ लोगों से जब उन्होंने कहा कि यू नो आई नो यू डब फॉर, ये मैं इंग्लिश टू हिंदी, सिर्फ हिंदी की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द हिंदी फिल्म्स और Hindi to यू नो Hindi. Yeah. बॉलीवुड मसाला, आई एम Yeah. टॉकिंग अबाउट द रेगुलर डब्स आल्सो। तो वो कहते थे हाँ कि एक ओ मानसून you dub-" वेडिंग हो गई या ऐसी कोई हाँ फिल्म हो गई हाँ जो. करेक्ट। तो बोलते थे अच्छा तुमने किया, अरे यार आई वांटेड टू डू दैट, उन्होंने मना किया। अब वो क्यों मना किया वाज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कभी कभी, क्योंकि दैट गेट्स लॉस्ट, क्योंकि नॉट नेसेसरीली कोई एक्टर उस वक्त अगर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है उस फिल्म में, लेकिन वो अपना परफॉर्मेंस रेप्लिकेट नहीं कर पा रहे हैं इन द डब, वो एक अलग टेक्निक होती है, वो एक अलग यू नो जिस करेक्ट. जबान में उन्होंने एक्ट किया है और जिस जबान में वो डब किया जा रहा है, वो दो बहुत अलग पहलू हैं। करेक्ट. उसके And करेक्ट. उनमें if परफॉर्मेंसेस I may just pick up from where you are right now, Viraj, talking about या skill and technique. Um, First thing I'd like to ask the three of you is that हम इंग्लिश टू हिंदी डब करते हैं सबसे ज्यादा, उसके बाद हिंदी टू हिंदी डब करते हैं, जो ओरिजिनल राइट। एक्टर्स की डबिंग हम करते हैं, ओरिजिनल फिल्म्स की डबिंग करते हैं, और हम साउथ टू हिंदी की डब करते हैं। हाँ, कैन यू गिव मी a demarcation of technique or skill level required for each of these? Some differences, subtle differences that you feel when you're doing these three different, distinctly different jobs, I would say. Okay, Sanket, you're taking it, Mayur? Yeah, Okay, So I'll start. No problem. all of I'll I'll you. tell you start. one of the Yeah. biggest differences that I find. Sorry, is Mayur? I think Indian languages we are a little more comfortable with. But again, when it comes to South language, uh, all we have to pick up is more of emotions attached to the voice because the words uttered by the actor is not helping much. We don't know that language so efficiently that we can follow the words and then emote for the same. So That all is I if you're used to doing South to Hindi. That's if you're yeah, doing South yeah. language to Hindi. So when I'm Yeah. doing Hindi to Hindi, there is no issue. When I'm doing English to Hindi, yeah, you can follow the words. You know what are the lines, what are the dialogues, and then you can follow. But South to Hindi becomes little challenging with that because first of all, the whole orientation of the language of the sentence changes And in the South. construction. Yeah, so the Construction. construction is little weird, and then you have to see where you can bring the words on the words if possible, so that the lip sync also becomes tighter and it becomes more convincing. So and the writers sometimes have followed the same orientation that is there in the South language because they are not again primarily a South a Hindi writer or not a leading very experienced Hindi writers. So at times we just have to work with a script which is not so perfectly done, and then this is something that I normally do is I look at the emotion or I try to pay more attention to the emotion of the line rather than the words because that's not helping. So that's one technique you can say or one way of following. If I can have some strong emotion going on into that line, I will try to maintain that with little changes into the words and compromise
But if you try to follow the language, then maybe, the emotions will be lost, which will What be a about major loss, I think. what about you, Viraj? You want to tell me a little bit more about the distinction in the skill level, or what you need to do as a voice actor for each of these three different kinds of dubs? सबसे पहले अगर हिंदी फिल्म्स की बात की जाए, हिंदी डब्स बेसिकली, नॉट फिल्म्स पर से, बट कोई अगर हिंदी डब होता है, वो चाहे एडवर्टाइजिंग की बात हो या कोई डिजिटल फिल्म हो या कोई भी फिल्म हो, तो उसमें कभी-कभी ये होता है कि हमें जो परफॉर्मेंस जिस एक्टर ने जो भी परफॉर्म परफॉर्म किया किया है, है। वी आर कॉल्ड टू इम्प्रूव इट, तो सबसे पहले हमें वो अंडू करना है। हम्म। वो उस तरह से फॉलो आपको पायलट मिल रहा है, लेकिन आपको वो उस तरह से फॉलो नहीं करना है, तो आपकी परफॉर्मेंस एबिलिटी क्या होती है उसमें? हम्म। यू आर अल्टीमेटली, वी कॉल दिस वॉइस एक्टिंग। अल्टीमेटली आप आपके वॉइस के थ्रू कितना एक्ट कर पा रहे हो इस चीज़ में, हम्म। उस हम्म। चीज़ को अंडू करके एक नई चीज़ सामने लाने के लिए, क्योंकि अगर जैसे मयूर ने कहा इमोशंस की बात अगर की जाए, तो मेरे ख्याल से वही एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, परफॉर्मेंस को ध्यान में रखना बहुत-बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप ये हर किसी को ये लिबर्टी नहीं होती है कि वो बिफोर एंड आफ्टर या जो डब्ड वर्जन है वर्सेस ओरिजिनल पायलट का क्या है, वो क्या था, वो देखने की सहूलियत हर किसी को नहीं होती है, लेकिन उसमें बहुत फ़र्क होता है ना? तो वो एक बात होती है। दूसरी बात, अगर इंग्लिश की बात अगर की जाए, इंग्लिश की एक एक फाउंडेशन हर किसी का एक ही है, परफॉर्मेंस। यू हैव टू एक्ट, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर एक्टिंग वेल इन फ्रंट ऑफ योर माइक्रोफोन थ्रू योर वॉइस। और इट्स नॉट अबाउट योर वॉइस, इट्स अबाउट योर परफॉर्मेंस। वॉइस तो आप कितनी भी मॉड्यूलेशन अब जो करना है वो कर लो, लेकिन परफॉर्मेंस की बात होती है। तो इंग्लिश का एक अपना एक I अलग also feel that the content is also sometimes, becomes the leading factor, because करेक्ट, English movies, what we have seen Hollywood, when you are dubbing, it's more subtle, it's more, करेक्ट, Correct. I so was just करेक्ट, so coming you बहुत to that सटल as tone होता a है, it down, you tone it down, and टोन डाउन, you try to keep it, to fit into that genre. बिल्कुल, And when बिल्कुल, South again, maybe sometimes you have to go over the top. So ट्रू, you are personally not convinced. You want to do it little, more realistic or more natural. टोन इट डाउन, But here the scene and the content demands that. So you have to go over the top. So this is again one skill, which ट्रू, is required on part of a voice artist. That if you are doing a genre, then that demand of that genre of that movie is going to be, more dictating than what you feel about it. Correct. Like statistically speaking, I would say if I'm doing 10 South films, about 7 to 8 of them would be these loud dialogues or larger than life canvases where there's like an entire village standing in front of the hero or wo monologue deliver kar raha hai. Versus like if I do 10 English films, two of them will have two or three characters only that are loud. Other than that, overall, the whole subtlety becomes very important in English to Hindi dubs. But in South to Hindi, it is expected in majority of the films कि अगला डायलॉग मास बजना चाहिए, स्पीकर फटने चाहिए, लोगों को नाचना चाहिए, और वो फिर वो सटली रील सटली करना चाहिए बॉस, ट्रेंडिंग होना चाहिए, ये आजकल करेक्ट डिमांड है। करेक्ट। और अभी जो जैसे सेशन हुआ था एंड देन टू कंपेयर इट विद हिंदी टू हिंदी थिंग, क्या होता है कि if the dialogues are not written in a way, especially in Hindi to Hindi, that they are as colloquial, जैसे हम बात कर रहे हैं कि बीच में एक इंग्लिश वर्ड आ गया, बीच में कुछ हिंदी बोल दिया, बीच में करो फाय बोल दिया या ऐसा कुछ कर दिया, then it starts to seem unnatural. And this is exactly the conversation that these directors were having right now, कि फिर English to Hindi में या South to Hindi में we try to keep it as proper as we can. And then there are directors like Kalpesh जो script बाजू में रख देते हैं, and that's a very different story. But that's the that's one of those that's one of those major things that you need to kind of take care of. Performance wise, English to Hindi में बहुत tone down करना पड़ता है, and South to Hindi में you have to make sure कि ये dialogue पे ताली बजेगी 4 बार तो अगले पे 8 बार बजनी चाहिए. That is the mindset that you kind of play with. And I also think, just to add to this, like Sanket just said, uh, कल्पेश हो या कोई और हो जो सिर्फ में साइड में रहता है, I think you need to surrender yourself completely to the director, because Yeah. they are seeing this in and out, day in, day out. They are working on all the characters, they are working on all the tonality, what is the entire, it becomes a total different ball game when the dubbed version is out. So I think they are more into this more than you giving your 4 hours, 5 hours, 8 hours
and dubbing it versus the 80 hours that a director has given to it. So I think you surrendering yourself, you have to surrender yourself to the director. How much ever you feel कि ये take सही है, ये tone सही है, लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि अगर you can have your differences, वो अलग बात है, you know, पर अगर आपको surrender तो करना ही है, और फिर आपको जैसे जो डिमांड है, whatever it is, 4 बार तालियां, 8 बार, tone down, tone it up, जैसा भी है, then you have to go फिल्म about it. शूट हो रही हो या डब हो रही हो, डायरेक्टर इज फाइनली बिल्कुल। एंड अल्टीमेटली द कैप्टन ऑफ द बिल्कुल। शिप एंड ही नोज व्हाट द फिल्म इज अबाउट. बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि अगर इवन इफ यू डिसएग्री, आई थिंक सम ऑफ माय बेस्ट प्रोजेक्ट्स हैव कम आउट विद डायरेक्टर्स जिनके साथ मैं इतना फ्रैंक था कि आई डिसएग्री, तो आई टेल देम एंड दे आर एबल टू टेक दैट इनपुट, एंड व्हेन दे डिसएग्री विद द काइंड ऑफ टेक दैट आई एम गिविंग, दे आर एबल टू फ्रैंकली टेल मी दैट. और ऐसे जब प्रोजेक्ट्स हुए हैं कि जहां हम लोग ऑलमोस्ट एवरी सीन में भी यार अरे ऐसे नहीं बोल रहा है यार, ये एक्चुअली ये बताना चाहता है, नहीं 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 यार तू समझ नहीं रहा है. When it's this frank a conversation that happens, I think those are some of my best projects that have come across. I think. True. And sorry, Mona, please carry on. Sorry, you finish. Then I was moving on to the next thing. Yeah, no, only one more thing, to add to this entire thing, from one language to the others, especially South to Hindi or English to Hindi or Hindi to English, whichever that is, it's not, along with the performance, it's not also one more point which बार बार जब आता है, जब कोई recording अगर होती है, तो उस वक्त immediately अगर एक टेक होने के बाद एक टेक खत्म होता है और कहते हैं कि ये फिट नहीं हुआ. It's not about fitting. You need to perform the way you want to perform. फिट कर लेंगे, जिस तरह से करना है उसको कर लेंगे, लेकिन अगर परफॉर्मेंस सही है, अगर परफॉर्मेंस इतना वजन है आपके परफॉर्मेंस में, और अगर उसके बाद अगर कभी ऐसा होता है कि यार ये सिंक नहीं हुआ है, then I think there needs to be something, this whoever is people who are coming up in the industry and wanting to do these things. Very true. I have experienced, and few of our directors, they go out of the way. Yes, and try absolutely. to sync it. They sometimes they tell the sound engineer, अच्छा टेक है, मुझे यही चाहिए, आप फिट करो. आप करो. आप those directors also that they disagree with their sound engineers to keep the best take that they have got. क्योंकि वो परफॉर्मेंस इतना एक इंटरनल प्रोसेस होता है, एक आर्टिस्ट का इतना इंटरनल प्रोसेस होता है, यू आर कमिंग विद इट, और फिर वो आप उसको शायद रेप्लिकेट ना कर पाओ. और शायद आपको पता होता है बाद में कि आपने सिंक में जो लाइन दी है वो आपका बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं था, और बेस्ट परफॉर्मेंस ट्रैश बिन में गया है क्योंकि वो सिंक नहीं हो रहा था. तो यहाँ पे आपको वो इंजीनियर और वो डायरेक्टर वो समझते हैं आपकी प्रॉब्लम को, और फिर वो दे कम एट रेस्क्यू, दे से नहीं मैं इसको सिंक कर, 1 मिनट सर मुझे 2 मिनट दो. वो थोड़ा टाइम लेते हैं, उसको कहीं से काटते हैं, कहीं कुछ करते हैं. टेक्नोलॉजी इज देयर विद अस नाउअडेज, सो इतना मुश्किल भी नहीं होता है उनके लिए, एंड वेयरएवर दे कैन फिट इन, all our sound engineers, all our directors, they are making a lot of efforts. बिल्कुल. वो ब्रेक ले लेते हैं, वो कहते हैं इस लाइन को मार्कर डाल के इसको छोड़ दो, बाद में we will revisit, and they try to do something because उनको भी अच्छा लगता है ये टेक कन्विंसिंग है, मुझे यही रखना है. तो ये मतलब होता है अपनी इंडस्ट्री में, ये कॉपरेशन और ये टीम वर्क बिल्कुल हर जगह देखने मिलता है. ये तीनों लैंग्वेज में कौन सा सबसे कम वक्त लगता है और कौन सा सबसे ज्यादा वक्त लगता है डब करने में? हिंदी टू हिंदी, इंग्लिश टू हिंदी या साउथ टू हिंदी? For me, English to Hindi is easiest. Okay. Yeah. South to Hindi is fun. Hindi to Hindi, of course, is a challenge. Okay. Because you have the exact same words and you have to match it. No, because what Viraj said, you have to undo. That's I think that calls for more creativity. Yeah. Because now, और वो captivity बहुत मतलब tight sync है. आप थोड़ा भी इधर उधर सिंक में लिप में कोई लिबर्टी नहीं, उसको रखते हुए, वो लाइन को रखते हुए उसको एनहांस करना, ये मुझे लगता है सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है. सो प्राइमरी लैंग्वेज एनी, इफ इन द सेम लैंग्वेज यू आर डूइंग, दैट्स द मोस्ट चैलेंजिंग जॉब. सो हिंदी में जब आप करते हैं, वुड यू एग्री दैट इट्स अ टाइट रोप वॉक वेयर वी हैव टू नॉट ओनली लिसन टू द पायलट बट वी आल्सो हैव टू डिसाइड व्हाट एलिमेंट्स टू टेक फ्रॉम इट, बिकॉज़ ऑन द वन हैंड वी हैव टू मैच द एक्टर, on the other hand we have to improve their performance and at the same time sound natural and not sound like it's dubbed. Bilkul. And a bigger challenge, sometimes you might have to add a word or change the line also because they have said it wrongly maybe on the set, and then you are replacing the line, fitting something in between also, keeping the most of it. I think the biggest challenge is same language.
primary language and the dub language when they are same. Correct. If you ask me. Sanket, we couldn't hear you. I'm sorry. I was saying, regardless of the language, I think Monadi just described what dubbing is essentially. You know, whatever they've done, you need to kind of recreate it. The sync has to be there. You have to better it, and you know all of the. But it has to kind. These limitations and working with that on every line, and for every scene, every line, every word that you say has to be measured, but it has to be better. And it has to make sense, and it has to probably top what was done previously, and all of these factors is such a intense challenge that voice it actors. is. And so having an excellent team of a writer, an engineer, and a director along is what changes Is the. Swarg for us. Yes. But tell me, Viraj and Sanket, hardest and easiest. For me, nothing is easy. I think every the challenges are very different. That's what I want challenges to talk about. Yes, bolo na. Yeah, the challenges are really really different. जैसे मैंने कहा, और I'll just go back to the dub part जो हमने शुरुआत में बात की थी. There was a time when Hindi cinema was dubbed. We had the good fortune of having the directors in the dubbing room. Yeah. जो आपको बताते थे किस तरह से क्या क्या करना है. तो आपको जिस चीज को अंडू करना है उसे करना भी आसान नहीं होता था, लेकिन आपको एटलीस्ट एक यू वुड गेट a direction. Yeah, एक guideline है, एक direction है, आपको क्या करना है. I think you must remember this, Mona. Bhatt Saab had directed us in the dub room in Empire. I mean, it's unheard of, these things. Bhatt Saab है, I am in the left hand side, Mona is on the right hand side, और बीच में भट्ट साहब है जो हमें डायरेक्ट कर रहे हैं और हम लोग वहाँ डायलॉग्स बोल रहे हैं अपने. तो these are experiences, these are priceless moments. तो उस तरह से वो एक बात हो गई हिंदी की. South cinema is a different ball game, like Sanket said. How it's I think about. This was during Jism. This was Saya. Saya, but I also remember him coming during Jism and Yeah, telling of course. And I Of think course. the theme around which we are sounding speaking like a today. girl and start sounding like a woman. Sorry, I was telling the theme around which we are speaking today makes it even more challenging. Now you are not just dubbing, you are dubbing for a star. True. Yeah. So that becomes Exactly. और जब अगर वो स्टारडम पे ऑलरेडी पहुंच गए हैं फिर तो प्रेशर और बढ़ जाता है. बहुत ज्यादा एवरी लाइन, और आपको सोचने पे मजबूर होना पड़ता है कि क्या ये डायलॉग जो लिखा है ये इस स्टार की वोकैबुलरी में है, ये उस पे जाएगा, उस कैरेक्टर पे जाएगा कि नहीं. मतलब आप बाकी जगह पे आप ये इन चीजों पे इतना ज्यादा फोकस नहीं करते, लेकिन यहाँ आपको ये भी देखना पड़ता है बिकॉज किसने लिखा है, ये सारी चीजें उतनी हाईलाइट नहीं होती है, पहला वॉइस होता है और आप चाहते हैं कि आप एक सही लाइन बोलें और सही परफॉर्मेंस भी हो और वो सिंक में और वो कन्विंसिंग भी हो, वो बॉडी पे भी जाए, वो एनर्जी भी मैच हो, वो एटीट्यूड भी बना रहे. तो ये सारी चीजें स्टार वॉइसिंग को थोड़ा नहीं, few x times, I would say, few times the pressure increases, in fact. And the need for precision increases a lot more, I think. The accuracy level needs to be way in fact, higher. मैं mentally prepare होता हूँ कि I have to give multiple takes. I might have to ask for few more takes if I'm not satisfied. तो सबसे ज्यादा वक्त इसी में लग जाता है हिंदी टू हिंदी में. लगता है हिंदी टू हिंदी में, क्योंकि you want to perfect it to the best perfect level possible. तो उसमें लग जाता है. फिर भी लैंग्वेज टू लैंग्वेज में एक थोड़ा सा रहता है रूम की, एक लैंग्वेज से दूसरे में इतना परफेक्शन ही आप दे पाएंगे, तो वहां वो रूम थोड़ा सा बाकी लोग भी छोड़ते हैं. तो दैट वे इट बिकम्स लिटिल रिलैक्सिंग फॉर द एक्टर. बट हिंदी टू हिंदी में तो वो रूम नहीं है आपके पास. Of late I'm hearing certain things from people. As people are becoming more and more aware of dubbing, as people are watching, audience also watching more and more of dubbing, they're becoming also more keen listeners. और कभी-कभी मुझे ये सुनने में आता है कि अरे ये बहुत ज्यादा डब लग रहा है, नेचुरल नहीं लग रहा. How do you differentiate this in your performance? इनफैक्ट हिंदी फिल्म डब करने जाते हैं तो उनका पहला ब्रीफ यही रहता है कि डब्ड साउंड नहीं करना चाहिए.
हाँ, करा तो रहे डबिंग आर्टिस्ट। ये सुनने में ठीक है, लेकिन इसको आप एक्चुअली हाउ डू यू मेक इट हैपन? इसकी या इसकी इसका ट्रिक क्या है? व्हाट इज द मैं सीक्रेट? शुरू में सोचता था कि ये कहने के लिए कहते हैं, ये थोड़ा सा मतलब ये डबिंग नहीं, आर्टिस्ट पे ज्यादती है, डबिंग आर्टिस्ट को बुला रहे हो और ये भी कह रहे हो कि डब डब साउंड नहीं नहीं करना करना। चाहिए। बट आई थिंक दे आर वेरी फेयर व्हेन दे आर आस्किंग। यस। आई पर्सनली फील कि वो कहीं ना कहीं, बिकॉज सी एक लैंग्वेज से दूसरा करने में, मे बी बिकॉज ऑफ द रिदम, मे बी बिकॉज ऑफ द पेस, मे बी बिकॉज सो मेनी अदर थिंग्स दैट वी ब्रिंग एज द बैगेज ऑफ ऑल दीज प्रोजेक्ट्स, कहीं ना कहीं वो लगता है कि वो थोड़ा सा डब्ड है, उसको थोड़ा और नेचुरल फ्री फ्लोइंग किया जा सकता है, बट इट रिक्वायर्स डेफिनेटली मोर टाइम एंड एफर्ट्स। और जब वो या मिले तो आपको वो करना चाहिए। कैन वी आइडेंटिफाई एग्जैक्टली व्हाट काइंड ऑफ एफर्ट, विराज? आई फील जब हम डब करते हैं तो कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है, आर्टिस्ट के साथ ऐसा होता है, अगर मानो वो एक्टर जो आप जिसके लिए भी डब कर रहे हो, लैंग्वेज भले ही कोई भी हो, साउथ टू हिंदी सिनेमा और विच एवर सिनेमा और विच एवर कॉन्टेंट वॉट एवर इट इज, ये कभी कभी एक आप जब एक्ट करते हो, जो एक्ट कर रहा है बंदा, और उसके लिए आप जब डब करते हो, और अगर ऐसा कहा है पागल हो गया समझ नहीं आ रहा है तुझे यार, यू कैनॉट डब इट एज पागल हो गया समझ में नहीं आ रहा है कि तुझे यार, आप उस तरह से कर ही नहीं सकते। और कभी कभी ये चैलेंज हो जाता है उसमें कि आप चाहे उसे आप उस तरह से बोलने की कोशिश करो, लेकिन ये होता है यार ये आपकी वॉइस पतली हो गई, लेकिन पतली तो हो ही क्लैरिटी जाती है। सेक्रीफाइस हो गई, ये हो गया, हाँ, कुछ ना कुछ रहता है उसमें। और वो हो ही जाता है। नॉट ऑल कॉन्वर्सेशंस ऑफ आवर्स वी एंड अप स्पीकिंग इन द सेम मैनर। if there is राइट। something, and yeah, we don't say oh shit, we only say oh shit। ये ऐसे ही बात करेंगे हम लोग। हम तो वहां पर एक लिबर्टी होनी चाहिए कि जिस तरह से कोई आर्टिस्ट अगर उस तरह से परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, अगर कोई रोने का सीन है, आप उसको उसी तरह से, आप रोते नहीं हो, आप मतलब अपना वॉइस जो आप लेकर बैठे हो, आप यू डोंट क्राई थ्रू योर वॉइस, इट्स योर इमोशंस। और अब एक एक कुछ ऐसे हो ही जाती है, योर वॉइस ब्रेक्स, योर वॉइस, देयर आर सो मेनी थिंग्स इन वन पर्टिकुलर इमोशन। सो देयर यू कैन एटलीस्ट प्ले अराउंड, और वहां पर मेरे ख्याल से, आई मे बी रॉन्ग, यू कैन करेक्ट मी, बट वहां आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर इम्प्रूविंग in these kind of scenes versus only letting your voice be a bass voice, heavy voice, ये voice वो voice, उस तरह से नहीं, जो परफॉर्मेंस की डिमांड है आप उस तरह से परफॉर्म करो, ये ज्यादा राइट, जरूरी राइट, है राइट। ना। What are the things that you have been complimented on the most, Mayur, while during dubbing? जो आपके साथ काम कर रहे हैं, जो टेक्नीशियंस आपके साथ काम कर रहे हैं, वो किस चीज को सबसे ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं? I think it's I really didn't think about it ever. But मुझे लगता है कि I try to understand. I'm not just reading the lines which are given to me by the writer. And can there be a better way of saying? Are the most appropriate words used? Can there be more convincing or more appropriate word that we may use? So you mean So to say that you try to find different approaches to the same scene or to the same the dialogue? same line, yeah. Yeah. How about you, So Viraj? at times, but I have been criticized for the same also. कि your लिखा That's है पढ़ नहीं आया ऐसे. that's okay. So Everybody doesn't have to like everything we do. yeah, The that's effort true. is important. But I try to first get convinced myself कि ये line मुझे convince कर रही है. Then I will say, or sometimes I just have to say it. Then of course it will not be having the same kind of conviction. So that is a little unsatisfying for you as an artist also. Yeah. How about you, Viraj? और कभी कभी ये भी होता है दैट लाइंस आर मे बी डिफरेंट एंड यू कैनॉट चेंज देम, लेकिन कई बार ये लिबर्टी भी ली जा सकती है कि लाइन चेंज की जा सकती है, और उससे भी एक परफॉर्मेंस हो या आपके बोलने का तरीका हो, वो भी चेंज होता है। एंड सर्टन स्क्रिप्ट्स, लाइक आई डिड वन, व्हेन आई डब फॉर अवतार, not a single line was changed, not a single line was, it was so well written, it was so well done कि आपको भी अच्छा लगता है, यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, लाइक मयूर सेज, आप
बहुत ज्यादा आप वक्त लगाते हो। पहला दिन तो ऐसा होता है आपका समझने में, एक सुर क्या लगाना है इस चीज को, पहला दिन तो सुर में ही निकल जाता है। इसका सा क्या है वही पता चलने में 1 या 2 दिन लग जाते हैं। तो आप जो 4 घंटे 5 घंटे आपका टाइम चला जाता है वो इसी में चला जाता है कि इसका सुर क्या है, इसकी अंडरस्टैंडिंग तभी आपको मिल जाती है। I was asking you, okay, what is easiest and toughest for you between English, Hindi, and a South film? I mean, I don't think it's. I don't think it in think of it in terms of what is easy and what is tough. I think it's just enjoyable as a process overall. I think the whole time thing is just a myth. Is what I think. Sometimes something that looks really easy ends up taking 3 days, and something that looks super challenging might just get over in 4 hours. Like I said, ये पूरा वो trifecta क्या है, director, engineer, writer, and the script and everything. That changes timelines like nobody's business. I mean, you might think that this looks like a very easy project on paper, पर फिर शायद स्क्रिप्ट इतनी गड़बड़ हो कि आप हर लाइन में गोइंग बैक एंड फोर्थ एंड समथिंग दैट सीम्स अरे बाप रे इसमें इतने कैरेक्टर्स हैं या ये कैरेक्टर का दिस द रेंज ऑफ दिस कैरेक्टर इज सो मच, क्या हो जाएगा. But it's like he said, not a single line is changed, and you just breeze through the entire thing, and you're enjoying your performance. Then you're not just focusing on the grammar at all. आप ध्यान ही नहीं दे रहे उस पे. Those kind of projects then kind of change the game completely. So I think more than the whole time thing, but I mean, like we're talking about the stars thing, and also मैंने ऐसे ये जो star हैं मयूर भाई उनके like I've almost played a villain in every Rajnikant film to just go to Chennai and get beaten up by Rajnikant. तो हर एक फिल्म में, including the very recent one, I think Jailer, हर फिल्म में चेन्नई जाता हूँ as a villain और बहुत religiously मार खा के आता हूँ मयूर जी के कैरेक्टर से. मैंने भी किया है भाई, मास्टर में बहुत मारा तूने. He was doing Vijay and I was Talapati Vijay. तो वहाँ again that was a different character. विजय सेतुपति को प्ले करना वो बहुत सटल है, साउथ में रह के सटल करना, मतलब ऐसा नहीं है. स्टीरियोटाइप इसमें भी नहीं है, बहुत सारे एक्टर्स वहां पे भी वो ब्रेक कर रहे हैं, वो बहुत नेचुरल कर रहे हैं. तो अगेन एवरी प्रोजेक्ट, एवरी कैरेक्टर दैट दे आर पोर्ट्रेइंग, एवरी एक्टर विद देयर ओन स्टाइल. रजनी सर जेलर में अलग हैं, मुझे नहीं लगता कि पहले जो किया है, लेकिन अगेन इन टर्म्स ऑफ वॉइस लोग चाहेंगे कि आप वो कंसिस्टेंसी भी रखें. तो ये थोड़ा सा वॉकिंग अ टाइट रोप अगेन, कि आपको वो एटीट्यूड और वॉइस रखना है और साथ में आपको थोड़ी कंसिस्टेंसी उस स्टार वॉइस की और उसका एटीट्यूड भी बरकरार रहे उसमें. Sanket, we were also talking about how not to we tend to hear sometimes from the audience that this is sounding too dubbed, so too unreal and too unnatural. And where does the skill lie in making that change? I mean, I think to a good degree हम सब में वो skill है. The ability to exercise that skill, to basically break the rules of grammar and talk as we do in real life, and the ability to exercise that skill and the freedom that we are given depends project to project 100%. Can you identify that skill? I would say just the ability to be colloquial, to the ability to not be correct. I think because we're not in real life. I'm switching. I think all of us are switching over between languages, and I'll suddenly use a muhavra which is in Marathi and bring it in the conversation. But when we are dubbing these things, ये सारी चीजें उस पे depend करती है कि project में कितनी liberty दी गई है. And again, even with these limitations, I always tell people that, as anything else, this is an evolution. The whole example that I give them is always Jurassic Park, and everybody's like, "Arey Chipkali bol diya," yeah, everybody's like, "Arey Anant Mani bol diya," and I'm like, "But yes, but you've given somebody a project and you've told them to just do this. If I give you a new craft today and I tell you just develop this, you will take a couple of years or decades to kind of master it or perfect it or bring it to an international level." Which I think as an industry हम सब आ गए हैं. Our works or our dubs are now shown internationally. RRR English dub is what people are seeing across the oceans now, and so things like that are already happening. So as an industry, 100% the colloquial factor. You compare Jurassic 1 to Jurassic Park 4, you will see that there's a distinct change in the way delivery is done.
So everybody, the directors have evolved in their direction. Engineers have better techniques to figure out what they need. Writers are writing more colloquially. So ये सब कुछ एक process है. You have to give it time. And as far as things like Anant Mani are concerned, those are creative things, inputs that are taken. और मैं हमेशा लोगों को ये समझाता हूँ, if you understand an infinity stone and you're watching the film in Hindi, in English, but you're just, kind of dissing on something in Hindi, it was never meant for you. I'm sorry to tell you, आप हमारे target audience नहीं थे. I consider voicing to be something that brings communities together, that brings people together in a way that, something like an Inception is what I give an example of. कि अरे ये चार लोग इंग्लिश में 2 बार देख चुके हैं, 3 बार देख चुके हैं, फिर उनके समझ में आई. हिंदी में we've simplified. I remember Mona Di and I we'd voiced for Martian, and she was sitting with me all through the night. And all these astronomical figures or space terms and all हम simplify करने की कोशिश कर रहे थे, because उसके हिंदी proper terms अगर लेते तो वो कुछ अलग ही बन जाता. And so they've been simplified so that that person जो इंग्लिश नहीं समझता या सबटाइटल्स तेजी से नहीं पढ़ पाता, वो हिंदी डब देखे और उस कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बने जिसमें 4 साउथ बॉम्बे के बंदे इंग्लिश में नोलन के बारे में बात कर रहे हैं. And he can do so with confidence. और उन लोगों के लिए हम डब करते हैं. And when they appreciate it, that's all we need. I mean, I don't think the whole, is it perfect? No, it's not, but it will get there, and it's already gotten to a great place from where it started. So yeah, we know we are making progress that way. And Sanket, it's got to that place, and people who still try to put things down are just doing it for the sake of it. They are the same people who actually watch it also. Correct, absolutely. Yeah. And they just have nothing to do. They don't have anything else but Chipkali to come up with. One question that we are always asked, all of us, let's address it here. What do we do to look after our voice? What do we do to हम रियाज कैसे करते हैं और हम किसी रोल के लिए preparation कैसे करते हैं? I'm a music lover. मैं थोड़ा बहुत गा लेता हूँ. I think that's the best exercise one can have, and this helps in a great way as far as voicing is concerned. I think अच्छी sleep habits हो. If you get good sleep, that's the rest to the voice. तो जितना मतलब वॉइस की केयर करने के लिए इससे ज्यादा कुछ करने की मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा जरूरत होती है. बट हाँ, स्लीप डिप्राइव्ड हो अगर आप, तो वॉइस पे थोड़ा सा उसका असर लगेगा ही लगेगा. उसको नहीं छिपा सकते आप. थकी हुई वॉइस है तो वो समझ में आएगा और माइक पे बेशक पकड़ा जाएगा. तो ये एक चीज है. और रोल प्रिपरेशन, आई थिंक बहुत कम टाइम मिलता है हमको. फुल कॉन्सेंट्रेशन इसकी एक जबरदस्त इलाज है इसका. आप जब बैठ गए माइक पे, फोन वगैरह ठीक है, आज के जमाने में आप बहुत ज्यादा देर तक उससे दूर नहीं रह सकते. अब वो भी अलाउड नहीं है सर. या अपने से अलग फुल कंसंट्रेशन के साथ अगर आप उसमें रहो तो यू विल बी लर्निंग वेरी फास्ट, बिकॉज वेरी लिटिल टाइम इज गिवन टू अस. कोई कैरेक्टर शायद इतना ज्यादा तवज्जो उसको मतलब चाहता भी नहीं है. इट डजंट डिमांड दैट मच अमाउंट ऑफ time and the other energies that we might invest into it. तो आपको वही छोटे से वो दायरे में उसको समझ लेना है, फास्ट ग्रैस्प करना है चीजें. 2 3 4 जो रीटेक मिलते हैं उसी में आपको वो करना है. तो 2 चीजें. एक तो आप फुल कंसंट्रेशन, आपका जितना हो सके डिस्ट्रैक्शन उस समय अगर कम है. डबिंग एक्चुअली इज द गेम ऑफ कंसंट्रेशन. वॉइस बहुत बाद में आता है. How about you, Viraj? How would you like to? I'll add to Mayur. Singing really helps a lot. Yeah. आपकी voice को flexible भी बना देता है. This art is such कि you need to constantly. This is the physical aspect. There are also some other aspects like Mayur said about the sleeping habits and all these things. How the voice catches. You need to have some sort of some form of exercise, physical activities to be better in every way. And मेरे ख्याल से I think you try to absorb, like you said, Mona, some time ago, you try to absorb many things. I think you should kind of whatever interests you, reading or listening to some whatever. There are now so many podcasts and there are so many books and there are so many shows. I think you need to have it boils down to all these things. आपने जैसे पूछा हिंदी फिल्म हो या ये हो, आपको कल्चरली थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए चीजों के बारे में. आप किस तरह से आप
वो भी एक रियाजी है मेरे ख्याल से, this is Also, I would add, watching the works of other artists, fellow artists. That also, helps you a lot, learn a lot. a lot. 100%. How about you, Sanket? What would you like to add to this? So I think what I often say to people is that especially for us artists that live in the city, live in a city like Mumbai, हम इतना काम करते हैं कि कभी कभी रियाज करना या आवाज की एक्सरसाइज करने से ज्यादा आवाज को आराम देना जरूरी हो जाता है, और वो आई थिंक बहुत लोग नहीं करते, या वो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट वी काइंड ऑफ इग्नोर वेरी कन्वीनियंटली. इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिस आई थिंक हम बहुत लकी हैं कि इतने सारे प्रोजेक्ट्स इतने रैपिडली सक्सेशन में और इतना सारा स्टूडियो एक्सपोजर मिलता है, स्पेशली फॉर आर्टिस्ट हु लिव इन द सिटी, दैट इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिस आपको बहुत काम मिलता है. आप खुद को इम्प्रूव करने के लिए आपको बहुत कम टाइम लग जाता है, पर उसके बाद फिर this circle of voicing continuously can take a toll very quickly if you're not careful about it. So I think rather than more, especially for artists here, I think resting your voice is also something that you need to look into equally as much as you would kind of getting enough practice. Yes, extremely important. So Do we have to ask all the three things that have come out here, all the three things that have come out here are extremely important for anybody. Yeah. One is what Mayur said, is good sleep, good rest. Sanket, as you said, and Viraj and Mayur, both of you said that singing is the ultimate exercise for the voice. Sanket, do you sing? Absolutely not. This is a question that I address immediately and off the bat. I remember I was just listening to Asif talk about how he started with Ellie and he directed singing. और मुझे याद आया कि Frozen में I was voicing for Kristoff and his reindeer Sven. और they came back saying कि नहीं वो voice artist है, उसी से गाना गवा लो. And I'm like, but क्यों? मतलब why are you doing this? Just get a singer. And they're like, नहीं वो natural sound करेगा. I'm like, the person opposite is Sunidhi Chauhan. She's the one voicing for the character and singing her songs. Are you serious? So first day they sent a music director who broke his head and went back, and I think this was the second day when Asif came in and he broke his head as well, but somehow he got the song out from me. So I'm like, yes, I don't sing, please don't. Let's not go down that road. No, I don't think we all sing in that, the professional zone, but I think just as a part of our exercise. Exercise, yes, 100%. Years, all I'm trying to say. And there should be no exertion. No exertion, yeah. No exertion, no stress, no damage to the throat. Talk while less, this is more. गला फाड़ के नहीं गाना है हमको. Animation थोड़ा सा करता है तो के नहीं गाना है. Correct. Enjoy करके गाना है. Correct. Perform करने जैसे. How when we are dubbing an English to a Hindi film, I feel that has taught me so much of acting, because of the subtle nuances that we hear in when we listen to the pilot so carefully in English films, where we have to bring out so many subtle nuances, and you have to make your delivery also subtle in order to match that kind of a performance, which is a little more real and natural. Of course, our performances have also in our cinema have changed dramatically from the time all of us started working to today. Performances themselves have changed dramatically. Yeah. So our work also has changed. So English to Hindi was that for me, and because I did so much of English to Hindi, I didn't do very much South work during my time. I've done it all much later, but because I did so much of English to Hindi work, when I did Hindi to Hindi, it was like that. Sync करना, उसका nuance निकालना मुझे बहुत आसान लगता था, लेकिन the big difference was when I was dubbing English to Hindi, I wanted to hear, that is considered final, that performance. So I would hear that performance to replicate it as closely as possible. But when I was dubbing Hindi to Hindi, I would hear the performance and then I would switch off the pilot. Because by then, I felt it was my job to understand and the director to tell me कि इसमें से रखना क्या है और हटाना क्या है. So उसमें से कुछ elements रखने हैं because आपको you have to sound like the actor, and because Viraj specifically, you and I have dubbed for so many people. हमारा जो दौर था उस वक्त बहुत dubbing होता था. You and I are from that generation जब बहुत
हीरोज और हीरोइंस के डब होते थे, बिकॉज ऑल फिल्म्स वर 100% डब्ड. आज की तारीख में उतना नहीं होता है, बिकॉज ऑल फिल्म्स आर लिप सिंक. आई मीन सिंक साउंड लॉन्ग टर्म. तो आजकल उतना डबिंग नहीं होता है, वॉइस चेंजिंग नहीं होता है, लेकिन हमारे वक्त बहुत होता था. तो इन ऑर्डर टू साउंड डिफरेंट फॉर ईच एक्टर, unless you are imbibing what that actor has brought to the screen and the way they speak, you will not sound different for each actor. You will sound same across the board. So I think that was a big thing, big challenge for me specifically. And also because I always had a very childish, thin voice to begin with, I had to work very hard to, as Bhatt Saab said, sound like a woman. I had to really, really work on stop sounding like that and start sounding like this. I had to really learn how to undo the pitch and undo the sur and bring it down. तो जैसे आप लोगों ने कहा कि singing was the best teacher for that, because it teaches you sur, teaches you pitching, it teaches you control on the voice. फिर ये जो हम बात कर रहे थे डबिंग के बारे में कि how to not make it sound dubbed, I tend to think now, and especially when I speak to a lot of my students, I tell them that we have gotten used to listening to the pilot and speaking over it. When we are listening to the pilot and speaking over it, we are fighting with the pilot. We are fighting to hear ourselves over the pilot. And therefore, already our performance has gone one notch up above the pilot. And therefore, we are no longer matching it. We have gone past it. Exceeding it. Yeah. In terms of loudness, in terms of performance, in terms of emphasis. हमारा चैलेंज ये है कि हमको बोला जाता है कि देखो ओरिजिनल एक्टर का ना मॉड्यूलेशन थोड़ा चेंज करना है, या उन्होंने इतना अच्छा मॉड्यूलेट नहीं किया है, ये आपको करना है. तो हमको मॉड्यूलेट भी करना है और हमको डब नहीं भी साउंड करना है. मतलब ये जो फाइन लाइन है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था. सो आई फाइंड दैट हाउ टू मेक दिस more natural that is the reason I used to shut off the pilot and dub by myself, because I had to hear myself in silence कि अगर मैं actually ऐसे बोल रही हूँ किसी से बात कर रही हूँ, तो मैं किस सुर में बात करूंगी, और also how can I pull back my projection a little bit, how can I make it more natural, how can I stop emphasizing each word and throw away the lines a little bit more, make them a little more subtle. So I think each and every film has really honed one skill also for me to explore what I can do with myself and my voice. And I want to add to this that Mona made sure that I also dub without headphones. So yeah, there were many films when we were recording together where Mona said, take out a headphone and dub. I said, okay, I will. You hear yourself better, so you understand the performance and the subtlety of the performance much better. अपने आप आपका वो the drama kicks in very naturally. Yeah, and you would rehearse all the lines. You're not trying to match. You are not trying to hear yourself. You're not trying to do so. You're not distracted with so many things. You're only watching and you're speaking with a very, जैसे मयूर जी ने कहा कि with a lot of focus, with a lot of concentration, without listening to the other actor, उन्होंने क्या किया है. Those kind of things, I feel that it eliminates a lot of noise around you. The pilot noise, the shooting sound, the actor's voice, the other language, different modulation, different things. It eliminates a lot of things and allows you to just, it brings you into a kind of very zen situation to just perform. I think this has been very informative, and I'm so glad that we are exchanging such important information, which I think for newcomers especially, and for those who aspire to dub for the stars, this is invaluable information. So thank you so much, all of you. Mona, you used the line, you said "Hamare daur mein." So I think Sanket, you must have definitely dubbed one of these lines in Hindi ke किसी फलाने का दौर होता था, हमारा तो जमाना है. So आप लोगों का दौर, when you say हमारा दौर था, I would like to correct कि आपका जमाना था, आपका जमाना है और रहेगा हमेशा. So I think on that note, that one I have to tell you कि उस टाइम पे मैं जिस टाइप के रोल्स डब करती थी और आज के तारीख में जिस टाइप के रोल्स डब करती हूँ, उसमें जमीन आसमान का फर्क है. एंड आई एम लविंग द डिफरेंस, आई एम लविंग द चेंज.
True. Yeah. Mhm. The maturity of the Yes. roles, Yeah. Yeah. now, there's no more मुझे हाथ मत लगाओ, मुझे छूना मत, and मुझे, Correct. you know, I think Cinema this has moved actually. this Yes. this transformation, or rather this thing has happened across the board, even in terms of characters, in terms of the way things are being written the today, the way maturity, people are the things performing, we it's are more saying natural. now, the dialogues we are mouthing. Yeah, Yeah. yeah. I mean, And I also feel, you know, I complain. also I've had the really, most fun with saying funny things like एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, मतलब लाइफ में कब ऐसा मौका मिलता मुझे ये सब बोलने को. Correct. I think हिंदी मेरे में तो इसका सारे so एक डायलॉग ही fun. ऐसे वर्जन होते हैं. इस सेशन को सम अप करने के लिए इसका एक वर्जन हो सकता है कि इस बेशकीमती सेशन की कीमत देखने वाले तुम क्या जानो. तुम क्या जानो देखने वालों.